नमस्कार मित्रों। तो आपका स्वागत है फिनटेक की दुनिया में। तो फिनटेक की दुनिया जो है सो एक नया कार्यक्रम है जो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। इससे पहले मैं संडे पोइट्री सेशन मेरी मधुशाला मंच से प्रारंभ करता था। अभी इसी मंच को मैं ट्रांसफॉर्म किया हूँ फिनटेक की दुनिया में। तो आपको पता होगा कि मैं CFA हूँ, चार्टर्ड फाइनेंशियल एनालिस्ट। साथ में मैंने IIM कैलकाटा से भी अप्लाइड फिनांस की पढ़ाई पढ़ी है और इसके अलावा मैं NSE सर्टिफाइड मार्केट प्रोफेशनल भी हूँ। तो इन चीजों का मान रखते हुए मैं इतना बताता हूँ कि मैं आपके सामने कुछ रिसर्च पेपर, कुछ कई चुनी बातें, कुछ न्यूज पेपर्स के आइटम्स पेश करूंगा जिसके आधार पे आप कह सकते हैं कि जो भी मैं कह रहा हूँ वह कितना प्रभावी है और वह फ्यूचर में कितना प्रभाव रखता है। तो सबसे पहले हम नए वर्ष में दाखिल हो चुके हैं और इसके लिए आप लोगों को नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं और मेरे तरफ से भी और हमारी फिनटेक की दुनिया की तरफ से भी आप लोगों को नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। यह फिनटेक की दुनिया का कार्यक्रम जो है सो हर शनिवार चलेगा और सुबह 9 बजे से, और आप इसे देख सकते हैं। फ्यूचर में हम कोशिश करेंगे कि कुछ और भी व्यक्तियों को इससे जोड़ा जा सके। तो जैसा होगा आप देखेंगे या कैसा चलता है प्रोग्राम। अभी तो जस्ट स्टार्ट ही हुआ है, तो देखते हैं। तो इससे पहले मैं आगे बढ़ूं, मेरा आज का जो टॉपिक है वो है कि क्या क्रिप्टो करेंसी वो हमारे सेंट्रलाइज्ड बैंकिंग सिस्टम पे किसी प्रकार से थ्रेट है, किसी प्रकार उसे सेंट्रलाइज्ड बैंकिंग सिस्टम को कोई खतरा है कि क्रिप्टो करेंसी बहुत ज़्यादा प्रभावी हो जाएगा और मे बी बिटकॉइन इतना ज़्यादा प्रभावी हो जाएगा कि डॉलर पे खतरा आ जाएगा। मे बी रुपया फ्यूचर में उतना वैल्यू नहीं रखेगा जितना आज रखता है। हो सकता है सभी लोग अपने अपने करेंसी में ही मगरूर रहेंगे। तो इसी के ऊपर चर्चा करते हुए मैं आज का सेशन रखता हूँ, इज क्रिप्टो करेंसी ए थ्रेट टू द सेंट्रलाइज्ड बैंकिंग सिस्टम। तो इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, पहले हम इवोल्यूशन ऑफ मनी सिस्टम को थोड़ा ध्यान से सुन लेते हैं। शॉर्ट में सुनेंगे और जल्दी सुन करके निकल जाएंगे। तो हमारा मनी सिस्टम का स्टार्ट कैसे हुआ? बार्टर सिस्टम से हुआ, जहां पर पैसा नहीं हुआ करता था। तो पैसा नहीं होता था तो लोग कैसे किसी चीज का वैल्यू करते थे? तो क्या करते थे कि लोग एक काम किसी के यहाँ कर देते थे और दूसरा काम दूसरे लोग उनके यहाँ कर देते थे, तो दोनों को वो लोग मैच करा देते कि तुमने मेरा काम किया, मैंने तुम्हारा काम किया, चलो सेटल हो गया। तो पैसा की जरूरत नहीं पड़ी। तो कुछ लोग जैसे मछली बेच दिए अपने और मछली के बदले में कुछ चावल एक्सचेंज कर लिए। तो जिसके पास मछली का व्यापारी था वो मछली बेच दिया और जो चावल बेचता था किसान, वो मछली खरीद लिया मछली वाले से, उसको बदले में उसको चावल दे दिया और दोनों नेगोशिएट कर लिए कि कितना कितना एक दूसरे को देना है। तो ये बिना पैसा का सब कुछ चल जाता था। कुछ लोग, मेरे जैसे लोग या फिर आपके जैसे लोग, कुछ लोग आज भी कंसल्टिंग करते हैं। तो कंसल्टिंग करते हुए क्या करते हैं कि कुछ लोग फ्री में कंसल्टिंग कर देते हैं, कुछ लोग जो है तो कुछ पैसे दे देते हैं कंसल्टिंग करके और उसके बदले में कुछ मिल जाता है। तो कंसल्टिंग से भी बहुत कुछ होता है कि हमने तुम्हारा कंसल्टिंग कर दिया, तुमने मेरा कोई काम कर दिया, तो इस तरह से करके हमारा ये बैटर सिस्टम चल गया। तो कंसल्टिंग करने वाले लोग भी होते हैं, टिप्स दे देते हैं कि कौन सा स्टॉक मार्केट खरीदो, कौन सा नहीं खरीदो। तो उस टिप्स से भी लोग, वो फ्री में कंसल्टिंग हो गया। तो बहुत सारे कंसल्टिंग चलते रहते हैं आज भी, जो कि बाटा सिस्टम के बराबर ही है। तो इसके अलावा क्या हुआ, फिर फिजिकल करेंसी की बात आई। फिजिकल करेंसी जब आई तो फिर सेंट्रलाइज्ड मनी सिस्टम बना। इसके बाद फिर सेंट्रलाइज जो होने के का मतलब है कि हमारा आरबीआई जो है वो सबको गवर्न करता है। जितने भी बैंक्स इंडिया में ऑपरेट करते हैं वो सभी आरबीआई को रिपोर्ट करते हैं। तो इस तरह से हमारा जो मॉनेटरी सिस्टम इंडिया का है वो सेंट्रलाइज्ड है। उसी तरह से हमारा यूएस में जो सिस्टम है, सब फेड को रिजर्व, फेड बोलते हैं, जैसे आरबीआई इंडिया में वैसे फेड, फेडरल रिजर्व। तो उस फेड को वहाँ के सारे बैंक सिस्टम रिपोर्ट करते हैं। हर कंट्री का एक सेंट्रलाइज्ड गवर्निंग बॉडी होता है जिसको बाकी सारे बैंक्स रिपोर्ट करते हैं। तो वो सेंट्रलाइज्ड बैंकिंग सिस्टम हुआ। उसमें हमारे मनी बनते हैं। इसके बाद फिर हमारे प्लास्टिक मनी होती है, जो कि एक्चुअली मनी नहीं होती, क्रेडिट कार्ड जैसे होती है। तो क्रेडिट कार्ड होती है जो हमें सर्टिफाई करती है कि तुम इतना पैसा यूज कर सकते हो, लिमिट है तुम्हारा, उस लिमिट तक पैसा तुम्हारे पास पैसा हो या ना हो, तुम उस लिमिट तक पैसा यूज कर सकते हो। तो इस प्रकार सेंट्रलाइज्ड मनी सिस्टम के अंदर प्लास्टिक मनी भी होती है, क्रेडिट मनी भी होती है, लोन्स होती हैं, लोन के सिस्टम होते हैं, और भी बहुत कुछ होती है। तो वो सब पर एक एक करके प्रकाश डालेंगे और इसके देखेंगे कि किस तरह से मनी रेगुलेट होता है। तो इसके बाद हमारा डिजिटाइजेशन हो गया। डिजिटाइजेशन में हमारा
सब कुछ जैसे पेटीएम हो गया, पेपल हो गया, डिजिटल मनी हो गया। सो सब कुछ जो हो गया, सो हमारा बैंक अकाउंट में जो मनी दिख रहा है एज ए डिजिटल फॉर्म, उसको डिजिटल फॉर्म में ही ट्रांसफर कर दिए। सो 10 रुपया अगर हमको देना, तो 10 रुपया का नोट नहीं निकाल करके हम पेटीएम से ट्रांसफर कर दे रहे हैं, रुपए से ट्रांसफर कर दे रहे हैं। तो वो जो हो गया सो डिजिटल मनी हो गया, क्यों हमको दिख रहा है कि 10 रुपया लिखा हुआ है हमारे मोबाइल में, और वो हम ट्रांसफर कर दिए, तो वो उसी के बराबर 10 रुपया मेरे अकाउंट से माइनस हो गया। ये सब सिंपल मैथमेटिक्स पे काम कर जाता है, जो जोड़ घटाव गुना भाग से काम होता है। तो ये हो गया हमारा अब तक का सिस्टम। लेकिन अब जो हमारे सामने आ रहा है वो है क्रिप्टो करेंसी, इसके बाद फिर ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, और इसके बाद फिर बिटकॉइन, द वेरी फर्स्ट क्रिप्टो करेंसी दैट वाज एवर फॉर्म। तो उन सबों पर हम प्रकाश डालेंगे। तो क्रिएशन ऑफ मनी इन द इकोनॉमी, हमारी इकोनॉमी मनी कैसे बनता है। अब बहुत सारे रुपये जो छाप दिए, छापने से रुपया, अगर छापने से ही अगर इंडिया अमीर हो जाता, तो बहुत सारे नोट छाप देते और इसके बाद बोलते कि इंडिया के पास इतना पैसा है, इंडिया अमीर हो गया। नहीं, छापने से अमीर नहीं हो सकता है। तो उसका एक बैकलिंग होता है। तो हमारे पास कितने फॉरेन रिजर्व हैं, हमारे पास कितने बैलेंस ऑफ पेमेंट्स हैं, और इसके बाद फिर हमारे पास कितने गोल्ड्स हैं, सिल्वर हैं, मेटल्स हैं, ये सब मिल करके डिटरमाइन करते हैं कि हमारे पास एक्चुअली कितनी समृद्धि है। और उस समृद्धि के आधार पे हम बता सकते हैं कि हम इतना नोट छाप सकते हैं, ताकि हमारा सिस्टम अच्छा रहे और ज़्यादातर महंगाई भी ना हो। तो ये सारी चीज़ें को देखने के लिए हमें हमारा आरबीआई इजाज़त देता है कि कितना नोट छाप सकते हैं। तो नोट छापने से तब तो कोई मतलब ही नहीं रह गया, क्योंकि नोट छापो या ना छापो, सब कुछ तो डिजिटल होना है। तो नोट तो वैसे भी सर्कुलेशन में बहुत कम रहेगा, लोगों के पास बहुत कम पैसा रहेगा, सब कुछ तो मोबाइल से ट्रांजैक्शन होगा। तो वो तो एक बात है। तो फिर देखिए कि मनी मल्टीप्लायर क्या होता है, हमारा पैसा हमारे सिस्टम में बढ़ता कैसे है। अगर मान लो कि हमारे पास पूरे इंडिया में 1 करोड़ रुपया है, तो 1 करोड़ बढ़ते बढ़ते जाके 10 करोड़ तक भी हो सकता है। कैसे हो सकता है, तो उसके लिए मैंने एक वीडियो रखा है, वो वीडियो आप देखिए और समझिए इसको। Now that we know how money is defined, we'll learn how banks can affect the supply of money through fractional reserve banking. Let's imagine that you graduate from college and your grandma gives you $1,000 in cash that she's been saving under her mattress since the 1970s. And you deposit this cash in your checking account. What does the bank do with your money? Does it sit in a vault with your name on it? No. Banks lend most of your money to people who want to borrow. Banks keep in reserve only a fraction of your money. Money they keep in cash for the ATM or to meet withdrawal demands. This is why this system is known as fractional reserve banking. So what fraction of your deposit do banks keep in reserve? Well, large banks in the United States must keep in reserve at least $1 for every $10 in deposits. Or we say large banks are required to have a reserve ratio of at least 10%. But banks often have higher reserve ratios, depending upon how liquid that they want to be. If a bank is worried that its customers might withdraw most of their money, or if bank loans are just not that profitable, banks will hold more reserves. So the reserve ratio can be greater than 10%, and it can change over time. Because of fractional reserve banking, the banking system has a big effect on the supply of money. Let's see how. Suppose that your bank keeps 10% of your $1,000 deposit, or $100 as reserve. And suppose it lends out 90%, or $900, say to Tyler, who's interested in starting a business. That $900 loan is credited to Tyler's checking account. So now there's $1,900 in new deposits. And since checkable deposits are part of the money supply has increased. And it doesn't stop there. Suppose that the bank holds 10% of Tyler's deposit in reserve, and it lends out 90%, or $810, say to Janet.
Now deposits have increased by $2,710. And suppose that 10% of Janet's money is held in reserve and the rest is lent out. And so this process continues. And as the banks make more loans, that increases the number of deposits, which increases the number of loans, which increases the number of deposits. So how much money do we ultimately end up with? You can figure that out using what's called the money multiplier. The money multiplier tells us how many dollars worth of deposits are created with each additional dollar of reserves. And the money multiplier is simple. It's just 1 divided by the reserve ratio. So if the reserve ratio is 10%, the money multiplier is 1 divided by 0.1 or 10. And what that means is that $1 in new reserves will ultimately lead through the multiplier process to $10 in additional money as measured by, say, M1 or M2. Now let's clarify our previous example and why it was key that Grandma was pulling cash from under her mattress. If Grandma had instead given you a check for $1,000, she'd simply be transferring money from her account to yours, which would not be creating new reserves. And so we wouldn't see this multiplier effect. And actually, the key player here isn't Grandma, it's Uncle Sam. The Federal Reserve can, with the click of a computer button, create new money which it can use to buy financial assets, thus injecting new reserves into the banking system. But the Fed's control over the money supply process is indirect. If banks hold the minimum amount of required reserves, 10%, as we assumed earlier, then the money multiplier will be close to 10. And if this is the case, the Fed will have a lot of leverage to move M1 and M2 with a small change in reserves. But in normal circumstances, the actual money multiplier is closer to 3. How come? Well, remember, banks can't hold less than 10% in reserve. They can always hold more. And the more banks hold in reserve, the lower the money multiplier. So it's important to understand that the money multiplier isn't a fixed number, and the multiplier process isn't a mechanical relation. So we saw that how money multiplier is applied by Reserve Bank as fractional reserve and with the help of fractional reserve ratio. So this kind of concept comes into play when we talk about centralized banking system. So loan plays a major role, and with the help of loans, all the banks runs, and with the help of loans, all these things happens. The money multiplies from 10 crores to 100 crores, like that it happens. But now we will talk about something that is called origin of cryptocurrency. With the help of this cryptocurrency, shall we able to maintain that kind of system? Obviously not. Let us see what this cryptocurrency is. The cryptocurrency was invented in 2008 by an unknown person. An unknown person, just think, or group of people. So just few people using the name Nakamoto. The currency began to use in 2009 when its implementation was released as open source software. And this is taken from Wikipedia. So just imagine just a group of people who started getting transaction among themselves using some Bitcoin or some digital space that becomes so popular later on that it became a open source software like something, and it came to be known as Bitcoin as a cryptocurrency. So Bitcoin is a decentralized digital currency, unlike the centralized banking system have dollar or rupee. So without a central bank or a single administrator that can be sent from user to user on peer to peer Bitcoin network without the need of intermediaries. Transactions are verified by network nodes through cryptography and recorded in public distributed ledger called Bitcoin blockchain. So this is the way we understand what this blockchain is, a technology which generally helps us understand how
cryptocurrency works. So bitcoins are created as a reward for a process known as mining. So we do employ lots of effort to mine cryptocurrency. We identify something, we give their nodes, and we give address, we just join, we create money by mining. This is called cryptocurrency. We'll go into this details sometimes in some other sessions in future, how mining is done and all. But for now, just let us know that how bitcoins works. So bitcoin has been criticized for its use in illegal transactions, the large amount of electricity that is used in its mining, and the price volatility. As you know, its price sometimes goes very high, then it comes very low. So there is a high price volatility in the bitcoin. So, and the thefts from the exchanges, people make theft regarding bitcoins and all. There are lots of transaction related expenses also, that also goes some way illegal in sometimes. So there are lots of things. The use of cryptocurrency, it is not very much regularized as of now. Because of that, we face lots of issues, lots of corruptions are there in the use of bitcoin. It's not like in our federal reserve system or any other banking system. There is no corruption. Corruption is everywhere, so even it is in bitcoin and cryptocurrency. But let us see, study a little bit more. I will going to highlight one paper, that is how much do cryptocurrencies alter the fundamental function of money in future. So it was written in 2019 by these authors, ed and margarita. So they were the authors of this title. And I'm going to highlight few points from that, and I will give my own values onto that. So it has been a record year. Let's get some facts and figures from the current things that is going on in crypto world. So it has been a record year for the crypto currency market, which briefly surpassed 3 trillion in value in November 2021 alone. $3 trillion it has surpassed. So cryptocurrency has already capitalized a big part of our monetary network. So now it is really going to be a threat on the banking system across the globe, because 3 trillion is not a small amount. A company having 1 billion capitalization is known as a very big company. A person having $1 billion net worth is known as a billionaire, and it is regarded as a very big person. So $3 trillion equivalent cryptocurrencies is already there in the market. You can just imagine it can blow up the economy if required in future. So in June 2021, El Salvador passed a new law to adopt Bitcoin as a legal tender, becoming the first country to do so. So one of the countries has already accepted Bitcoin as their uh, functioning currency also. So now gradually other countries will also adopt the Bitcoin as their Bitcoin or Ethereum or some other currency may accept. I'm not saying they will definitely accept or something, but they may accept these blockchain based currencies as their national currency also, something like that. So there's a quite volatility in the cryptocurrencies. Some new cryptocurrencies went very high, manifold. Some cryptocurrencies went 100 times appreciation also. Some got double also. Even Bitcoin got lots of appreciation. So Bitcoin and Ethereum also got appreciated. But if we'll consider the appreciation of Bitcoin, Ethereum, and other popular cryptocurrencies in terms of dollar, rupees, or any other such currencies, these centralized bank currencies are nowhere that much appreciated. So the difference is quite different. So we are seeing, despite these volatilities and all, there is a high rise in the consumption of and in the utilization of these cryptocurrencies, and people are moving towards cryptocurrencies. And what could be the reason why people are moving towards cryptocurrencies, we'll see next. Because common people don't know all these things, but those who are technologically very expert, and those people जिनके पास बहुत सारा
समय है वो अध्ययन करते हैं और देखते हैं कि क्या चीज़ मार्केट में सही होने वाला है, क्या गलत होने वाला है। वो सही आने समय से पहले कुछ कुछ डिसीजन ले लेते हैं, कुछ रिस्की डिसीजन भी ले लेते हैं, और इसके बाद वो रिस्क के साथ प्रॉफिट होता है। अगर रिस्क के साथ हम अच्छी से तालमेल बना के चलें तो से बड़ा प्रॉफिट किया जा सकता है। तो रिस्क के साथ प्रॉफिट है और रिस्क के साथ तबाही भी होती है। एक बार कुछ गड़बड़ हो गया तो सब कुछ पानी भी हो जाएगा, तो ऐसा होता है। तो ओवर $7.7 बिलियन was stolen in cryptocurrency scam worldwide in 2021 alone. So $7.7 बिलियन was stolen in cryptocurrency. तो क्रिप्टोकरेंसी में स्कैम भी उतने ही बड़े लेवल का हुआ, और जो कि पिछले साल जो हुआ था उसका 81% ज्यादा है। सो सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन SEC, लाइक इंडिया में सेबी है जो कि हमारे स्टॉक मार्केट को रेगुलेशन करता है, उसी तरह से अमेरिका का सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन SEC के चेयरमैन गैरी ग्लेंसर ने बोला कि जो भी रेगुलेटरी फ्रेमवर्क है क्रिप्टो करेंसी का तो उसको अच्छा से ध्यान देना जरूरी है, क्योंकि ये रेगुलेशन जो हम इस तरह से पैसे पे लगा रहे हैं, स्टॉक मार्केट पे लगा रहे हैं, हर चीज पे लगा रहे हैं, क्रिप्टो करेंसी पे अगर नहीं लगाएंगे तो क्रिप्टो करेंसी एक तरह से भले ही डिसेंट्रलाइज्ड है लेकिन हमारे कंट्रोल से बाहर हो जाएगा, तो ये अच्छी बात नहीं है। तो उस पर रेगुलेशन लगाना जरूरी है और टफ रेगुलेशन लगाना जरूरी है। तो ये तो मैं भी हमेशा कहता हूँ कि रेगुलेशन तो लगाना जरूरी है। जिस चीज का मार्केट वैल्यू $3 ट्रिलियन हो गया, अगर वो आउट ऑफ रेगुलेशन रहा तो वो कुछ भी हो सकता है। वो इट्स लाइक एक वायरस की तरह ही काम कर सकता है। इंस्टेड अगर रेगुलेशन होगा तो ये बहुत अच्छा काम करेगा, रेगुलेशन नहीं हो तो ये वायरस की तरह काम करेगा। तो फिर नेक्स्ट लेट्स सी द बेनिफिट्स ऑफ क्रिप्टो करेंसी। The most prominent benefit of cryptocurrency is that it is decentralized in nature, that makes it less prone to corruption and manipulation. अभी अभी हमने देखा कि कितने बिलियन डॉलर का $7.7 बिलियन का करप्शन हुआ है क्रिप्टो करेंसी में, बिटकॉइन में, और इसके बाद हम पढ़ रहे हैं कि ये लेस प्रोन टू करप्शन और मैनिपुलेशन है। तो दोनों हमें को कॉन्ट्रास्टिंग बात सुनने को मिल रहा है। आप समझ सकते हो कि दोनों कितना कॉन्ट्रास्टिंग है। तो एक तरफ हम बोल रहे हैं कि इसमें करप्शन होने के चांसेस कम है, दूसरी तरफ इसमें करप्शन ज्यादा। करप्शन ज्यादा क्यों हो रहा है? क्योंकि रेगुलेशन कम है। अगर रेगुलेशन इस पे टाइट कर दिया जाए तो करप्शन ऑब्वियसली बहुत कम हो जाएगा। हमें पता नहीं है कि कौन बिटकॉइन यूज कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है, तो हमें उस रेगुलेशन को टाइट करना पड़ेगा, इसे गवर्नमेंट के कंट्रोल में लाना पड़ेगा। दिस इज वेरी मच अनलाइक द करेंसी मार्केट वेयर ओनली ए फ्यू प्लेयर्स सच एज सेंट्रल बैंक्स एंड लार्ज कमर्शियल बैंक्स डोमिनेट इन मार्केट। तो इसमें कोई बड़े बड़े रेगुलेटरी बॉडी, बैंक्स और फाइनेंशियल बॉडीज इसमें नहीं है। इसमें एक एक आदमी का योगदान है। इट्स एवरीबॉडीज मनी। क्रिप्टो करेंसी इज एवरीबॉडीज मनी। यहाँ पर केवल बैंक नहीं डिसाइड करते हैं कि क्या होगा, यहाँ पर टेक्नोलॉजी डिसाइड करता है, लोग डिसाइड करते हैं। तो दिस सिस्टम इज देयर फॉर डिपेंडेंट ऑन ट्रस्ट इन द सेंट्रल अथॉरिटीज। सो जो हमारा रेगुलेटरी ये सेंट्रलाइज बैंकिंग सिस्टम है वो सेंट्रल बैंकिंग अथॉरिटीज के ट्रस्ट में था, तो ऑब्वियसली वो गवर्नमेंट के अंदर आते हैं। तो गवर्नमेंट सेंट्रल रेगुलेटरी बॉडीज के अंदर, सेंट्रल रेगुलेटरी बॉडीज और सेंट्रल बैंक सब जो हो सो गवर्नमेंट के अंदर में आता है। गवर्नमेंट को हम चुनते हैं तो हमारे ही अंडर में था। लेकिन इसको जो ये बिटकॉइन वगैरह ये सब जो आ रहा है क्रिप्टो करेंसी, इसको हमने ही बनाया है और ये हमारे डायरेक्ट कंट्रोल में है, तो इसको गवर्नमेंट को कंट्रोल लेना पड़ेगा। दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। When the system is decentralized, there is less chance that such manipulation is possible, and which clearly increases the major benefit of blockchain in terms of reducing the monopoly power of financial institutions. तो financial institutions का मोनोपोली हट जाएगा अगर सब कुछ ब्लॉकचेन ब्लॉकचेन हो जाएगा तो, लेकिन उसको डिसेंट्रलाइज करना भी जरूरी है। This benefit of blockchain technology is also supported by Schwann, 2017, who concluded that more frequent use of blockchain technology can help reduce infrastructure related costs, since it requires relatively smaller human and technological resources, resulting in reduced upfront cost and maintenance. So एक बार ब्लॉकचेन बेस्ड क्रिप्टो करेंसी पूरी तरह से दुनिया में छा जाएगा तो सब कुछ इतना ऑटोमेटेड हो जाएगा कि लोगों को सोचना ही नहीं पड़ेगा कि बैंक जाए या नहीं जाए। सब कुछ मोबाइल नेटवर्क से हो जाएगा। जितने भी
लोन सिस्टम है वो सब कोऑपरेटिव हाउसेस बन जाएंगे ब्लॉकचेन के अपने, उससे लोन मिल जाएगा, सब कुछ अपने इंटर रिलेटेड नेटवर्क से बहुत कुछ हो जाएगा, लोग अपना काम खुद कर लेंगे छोटे छोटे ग्रुप में, तो हमें फिर बैंक की जरूरत भी नहीं पड़ सकती है। लेकिन बैंक की जरूरत तो पड़ेगी, तो फिर द इश्यूएंस ऑफ बेसिस ए क्रिप्टो करेंसी whose tokens can be robustly pegged to basket of goods or arbitrary assets. So there is a concept of algorithmic central bank also. बैंक की जरूरत तब भी पड़ेगी ब्लॉकचेन के साथ साथ भी, तो वो है एल्गोरिथमिक सेंट्रल बैंक। वो कैसा होगा? द इश्यूएंस ऑफ बेसिस, एक क्रिप्टो करेंसी है जिसको बेसिस बोलते हैं, whose tokens can be robustly pegged to the basket of goods or arbitrary assets. This currency has a more stable price than its predecessors such as Bitcoin. So Bitcoin से ज़्यादा efficient है ये, और although it has not yet reached the same market capitalization and reach, in order to make basis similar to standard central bank currency, one could for instance peg it to the USD and update the peg to consumer price index CPI. तो उस ब्लॉकचेन बेस्ड करेंसी को हम यूएटी के साथ लिंक कर देंगे और उसको सीपीआई के साथ लिंक कर देंगे, और इसके बाद वो हमारा ब्लॉकचेन बेस्ड जो करेंसी है जिसको बोल रहे हैं बेसिस, वो यूएसटी के साथ साथ रेगुलेट होगा। So another proposition regarding top cryptocurrency like Bitcoin and Ethereum is that we can capitalize them universally by agreement of top banks and put them under universal regulation. Cryptocurrency is just like the initiation of, it's my proposition, I am saying, it's like the initiation of Linux as an open source system where Windows and Mac operating under branded by big businesses. जैसे हमारा विंडोज मैक जो है सो बिग बिजनेस के द्वारा ब्रांडेड था, लेकिन लाइनक्स जब आया तो ओपन सोर्स सिस्टम था, तो लोग आज भी लाइनक्स पे काम करते हैं, विंडोज पे काम करते हैं और मैक पे भी काम करते हैं, तो तीनों पे काम करते हैं। तो इस प्रकार कोई एग्जिस्टेंस होगा और सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट का एक आइडिया है जो कि कायम बना रहेगा। तो सभी तरह के करेंसी के साथ क्रिप्टो करेंसी भी चलता रहेगा, बस इसको रेगुलराइज कर दो, इसको रेगुलेट भी कर दो, हर तरह से इसको कंट्रोल में रखो। That's what is the need of ours. So yes, the goal should be public money should not go waste. Public money waste नहीं जाना चाहिए. Just like energy is neither created nor destroyed, it is only transferred from one medium to another. So अगर किसी का पैसा बिटकॉइन में जाता है तो वो जस्ट वेस्ट नहीं हो जाना चाहिए, वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में चला जाएगा, एक आदमी से दूसरे आदमी में जाएगा, करप्शन भी होगा, हर तरह का चीज होगा, लेकिन कुछ वेस्ट तो नहीं होगा जहां तक मुझे लगता है, क्योंकि पैसा जो एक बार बन चुका हो तो पैसा बन चुका है, दैट कम्स फ्रॉम लेबर दैट वी डू एवरी डे। पैसा तो लेबर से ही बनता है अल्टीमेटली। तो पीपल आर नॉट रियली फैमिलियर विद द टेक्नोलॉजी एप्लीकेशंस। सो इज डिजिटल करेंसी ए मनी, एक क्वेश्चन है, इसको क्लेरिफाई कर देते हैं। पीपल आर नॉट रियली फैमिलियर विद द टेक्नोलॉजी एप्लीकेशंस दैट are not very user friendly. They are not very safe relative to deposits as they display great volatility in the exchange rates. सो जहां पर भी हमको डिजिटल मनी या फिर क्रिप्टो करेंसी में जहां कहीं भी वॉलेटिलिटी देखने को मिलता है, टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा इन्वॉल्व होता है, पुराने जमाने के लोग उससे दूर रहना चाहते हैं, उनको लगता है कि वो हरी नोट ही उनके हाथ में आए तो उसी से वो खुश रहेंगे, तो लोग वो हरी नोट पे आज भी बहुत भरोसा करते हैं। Digital currencies cannot be stored as bank deposits. They are usually part of digital wallets, which are exposed to many risks and costs. There is no standard insurance for these wallets, as in the case of deposits. Digital currencies cannot be stored as bank deposits. सो डिजिटल करेंसीज जो क्रिप्टो करेंसीज है उसको बैंक डिपॉजिट की तरह हम जमा नहीं कर सकते। दे आर यूजुअली पार्ट ऑफ डिजिटल वैलेट्स, और डिजिटल वैलेट्स जो है सो वो बहुत सारे रिस्क होते हैं उनमें। सो ऑल दिस थिंग्स यू कैन सी। देन डिजिटल करेंसीज आर नॉट यूनिट ऑफ अकाउंट फॉर लोन्स एंड मॉर्गेजेस। Also, no credit or credit cards are denominated in digital currencies either. So digital currency जब भी हम बोल रहे हैं इसका मतलब समझिए कि हम क्रिप्टो करेंसी की बात कर रहे हैं, और digital currencies are not a claim and thus could be somehow considered a commodity. However, they are intangible, not as gold, for instance. So these are the some clarification, some points that is I am giving reference from one of the research paper.
And then digital currencies can be used only if user agree that they can be used, but they are currently valued by dollar and rupees, traded on exchanges, and is almost going to be part and parcel of human civilization. So this is all I have explained about what digital currency money is. So next is some conclusion. That's my own assumption and conclusion that you can go through. You see how cool it is. So all cash, credit, and digital or virtual money should be allowed in economy as opportunity for all. So people, banks often say that we will not regulate Bitcoin, we will not regulate Ethereum, we will not regulate at least those things which have already proven that they are technology proof, they are good enough, people are already working on them, everything is fine. That should be given regulation. That should be given regulation, that should come into the market. They should be allowed to compete with other currencies also, USD, dollar, rupee, and all. That's not an issue, because everything is opportunity is equal for all, as we have understood from our basic fundamental rights. So it's applicable to the currencies that are gaining momentum in public also. So all cash, credit, digital, virtual money should be allowed in economy as opportunity for all. So this is my thinking and I tell. So all these things should be allowed. We have way to regulate things. We'll regulate things the way it is applicable. How, what kind of regulation should be there, that is also there. So let's each nation decide the regulation on each type of currency and products. Whatever currency and products we are getting in this novel times, in this modern times, in 21st century, latest technology times. So all these things should be regulated. We should see what can be regulated in which terms. So that should be seen. High volatile currency or cryptocurrency should be deregulated. If something is very high volatile, that should be deregulated, or their trading should be delayed by 2 days, 5 days, 1 month, like that, so that those things will come at its norm and that will grow in a proper systematic way. It should not happen that today some currency is having value 100, tomorrow it will become 10,000. So this will lead to lots of riskiness in the market, and that should not happen. If anything is going that abruptly, then it should be a stop for a week, for a month, like that, or at least for a day. And then stable and technical efficient currencies should be welcomed by government and appreciated. And if there is something coming as stable and technically efficient currencies, then that things should be appreciated by the top regulators, top technical experts, and top money minded people also. And then existing currencies like dollar and rupees should use Bitcoin blockchain based architecture to create a hybrid currency. Because if existing market will not do some innovation, because all the money markets are simply they're printing money, and by that they are working, and then by multiplier effects they are increasing money supply and all. So these concepts are going to get a overall change. Things will not remain the way that it was for the last 20, 30, 40, or even 100 years. Things will go a big change. Entire banking thing will be relooked, and all the way money is getting created in the market will change. So how we should think about that, how this change should not look like a big blow, it should be a very smooth change. So in order to make this a smooth change, first make a blockchain based cryptocurrency, as I said earlier also. Like this one I gave example, basis. So like basis, another some cryptocurrencies should be created, that should be backed by dollar and rupee in such a way that it can be, and it can be correlated, and then they can be regulated in a centralized mechanism also. So that way it can compete effectively with other cryptocurrencies like Bitcoin and Ethereum.
It's time to redefine money and virtual money, as we are going to live in both spaces simultaneously. A popular and universal hybrid currency is the need of the hour. I have repeatedly said these things and I'm telling it now. A universal hybrid currency is the need of the hour, and that should be popular, and many countries should accept that. Banks, unlike their name suggests, would be like an intermediary and regulatory body in future that will determine and settle all cash, credits, loans, and virtual money based requirements. So bank will be there, bank was there, but it will not be synonym to its mm, name like bank, but it will be an intermediary bank or intermediary financial institution rather than just bank. This is going to happen in future because everything will be decentralized, everything will be like cryptocurrency which is not having any bank. So even money, normal money, will not have any bank. People will look for communities and they will take loan from communities, they will not take loans from bank. So these kind of things will happen. Things are happening like this currently and this will happen in future. And with this, I want to conclude everything, and that's all. I hope you enjoyed my chapter on cryptocurrency, how it's going to shape banking in future. And every Saturday we'll meet with some a specific topic. We'll go into the detail of that topic and we'll see how this is going to change the world. And because fintech is the latest novel topic in finance and technology, and that's what we are going to focus on, and we'll keep talking about fintech. So fintech की दुनिया में आपका स्वागत है। और तो इसी के साथ मैं अब आपको एक बार फिर से बता देता हूँ कि ये हमारा फिनटेक का पहला एपिसोड था, लेकिन साइंस की दुनिया हमने पहली बार स्टार्ट किया था, तो ये फिनटेक था। और फिनटेक के बाद हम इसी प्रकार अन्य नए टॉपिक पे हर शनिवार को मिलते रहेंगे और कुछ बातें करेंगे, और आशा करते हैं कि आप इससे लाभान्वित होंगे। और अगर आपको लगता है कि मेरे बताए गए किसी भी चीज़ों में किसी भी प्रकार का कोई गलत है, जो कि आपको लगता है कि गलत है या फिर आप उस पर चर्चा करना चाहते हैं, तो आप यूट्यूब के इस वीडियो पर कमेंट करें और आप अपने विचार व्यक्त करें, हम उसका जवाब देंगे। और इसी के साथ हम धन्यवाद कहते हैं और नए साल की एक बार फिर से आपको बहुत बहुत बधाइयाँ। धन्यवाद।